Welcome back to the channel everyone. I hope you are doing absolutely well. This is 80 back with another video. So today's video it's gonna be pretty different from what I have been doing on this channel. So let's welcome the all new video of PC builds. Yes guys, आज से इस channel पर PC builds भी बनेंगे. I have got all the parts and I think a glimpse of what I'll be using as cabinet is visible for you here. I'm not sure whether it's visible right now. Okay, so let's start off by showing you all the parts that I have purchased for this build. Then I will show you the time lapse of this build. From now onwards, we'll be having regular PC builds on this channel. If you are new, consider subscribing and turning on that notification so that you receive all the latest updates from my channel, and like this video if you did. Let's now get started. So let us start off with the cabinet. और आज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 300 TG कैबिनेट. ये है कैबिनेट जो कि आता है 3 RGB फैंस के साथ जो कि फ्रंट साइड पे आते हैं और टेम्पर्ड ग्लास आता है फ्रंट और साइड में भी. सो इसको अनबॉक्स करके आई विल शो इट टू यू फर्स्ट. So guys, as you can see, I have removed this cabinet from this box and to be honest, it was very difficult for me. I don't know why. बहुत तकलीफ हो रही थी यार निकालने में, but still I managed to remove it. हाँ, I ended up breaking this one while removing that. As you can see, it's over there. But yes, here is the cabinet. So let me do one thing. I'll remove all this wrapping and I'll keep that on the top there. And then let me show it to you guys in detail. So guys, here is this Antec cabinet which is 300 TG. और ये cabinet why I selected is because this thing has got 3 RGB fans built inside it. So as you can see यहाँ पर 3 RGB fans हैं. So let me remove this slowly and show it to you. And I don't think it's visible. So once when I'll open this one in the later part, I'll show it to you. And as you can see, this is pure glass. टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ग्लास है ये. और यहाँ पर भी है, दिस इज कार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट. इट इज़ नॉट ग्लास बट दिस वन इज ग्लास हियर. और एज यू कैन सी वन मोर फैन इज देयर, बट स्टिल आई विल बी रिमूविंग दैट फैन एंड आई विल बी एडिंग एन RGB फैन देयर. सो दिस थिंग कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3,300 to 3,500 rupees. So Amazon का screenshot मैं यहाँ पर डाल दूंगा. But all these I purchased offline. So I'll show you the shop exactly. Like वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई है और वो भी मैं डाल दूंगा. वहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स के स्टॉक हैं guys. Stock is available. I'll be showing you that in the later part. So this is our cabinet which we'll be using for this build. So processor will be using the AMD Ryzen 3 3200G. Yes, इस प्राइस पर और कोई प्रोसेसर भाई जो परफॉर्मेंस ये देता है ना, like no other processor can give at this price point. As you can see, this is the AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega 8 graphics. However, हम graphic card use करने वाले हैं इसमें, so we will not be using this Radeon graphic. But still it comes with this graphics that's pretty good. Like Ryzen 3 3100 don't come with graphics. वो graphics के साथ नहीं आता है, उसको discrete graphic card की ज़रूरत होती है. तो अनफॉर्चुनेटली अभी इस टाइम पर वो अवेलेबल नहीं है कहीं भी. सो दैट्स द रीज़न आई वेंट विद दिस वन. सो दिस प्रोसेसर इज़ अ 4 कोर 4 थ्रेड प्रोसेसर एज यू कैन सी. और इसकी मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4 GHz और बेस है 3.6 GHz. हियर इट इज़. सो दिस विल बी आवर प्रोसेसर फॉर दिस बिल्ड. और ये प्रोसेसर लगभग 10,000 के बीच में पड़ेगा आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज सभी चीज़ों का प्राइस अभी हाई है, प्रोसेसर्स ग्राफिक कार्ड्स वगैरह, बिकॉज देयर इज़ नो स्टॉक अवेलेबल इन द मार्केट. सो टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड, आई वेंट विथ दिस मदरबोर्ड हियर. दिस इज़ द गीगाबाइट. सो मैं इसको साइड में रख देता हूँ पहले. ओके. So this is the Gigabyte B450M S2H motherboard. This motherboard is pretty famous because इस price point पर ये motherboard like काफ़ी common हो चुका है आज. And this motherboard is pretty good in quality as well. That's why I went with this one. हाँ, थोड़े कम में Asus का Prime motherboard आता था, like वो भी यही socket का है. But this one is better than that. That's why I went with this one. As you can see, brand new seal वगैरह सब कुछ है. So talking about the next stuff, which is our graphic card for the day, and here it is. So this is the Asus Phoenix GeForce GTX 1650. हाँ, 1650 के साथ गया मैं for this build. And yes guys, at this point of time, as I'm saying you again and again, graphic cards price is skyrocketing, I should say. So at the time of shooting this video, that is 6th of March 2021, graphic cards are not available. graphic cards ही नहीं भाई, like CPU GPU दोनों की shortage हो रखी है मार्केट में, कहीं भी स्टॉक ही नहीं मिल रहा है.
So guys, so I am right now in Arham Marketing in SP Road, Bangalore. So यहाँ पर stocks available हैं graphic cards के, and I just bought this system. So whose build what you are seeing on channel, right? So ये owner है shop के. So ये मिलेंगे आपको यहाँ पर on in SP Road, Bangalore. If you are somewhere near, you can definitely come here. GPU stocks are like not available online right now, and all of the online stores it's out of stock. But GPU stock है ना सर आपके पास? है 650 Ti. 1650, 1660, 3060, 3080, even 2060 we have stock. Almost we have every stock. Almost all the stocks are available here, so definitely check them out, guys. Google Map link is in the description. You can, yeah, definitely check them out. But in SP Road in Bangalore, I got this. However, the price is not normal. Price थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है. So normally this was available somewhere around 14,000 से लेके 15,000 की range में, when the demand was not that much. But at this point of time, you can see online 25,000 का बिक रहा है भाई. 25,000, 26,000, 20,000 के आसपास की रेंज में बिक रहा है. 20,000 to 24,000, 25,000 की रेंज में. और तो और अवेलेबल नहीं है for most of the part. I got this somewhere around 20,000 plus rupees. Yes, ज़्यादा पे किया है, बट क्या करें भाई, स्टॉक नहीं है कहीं भी. सो या ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड फॉर द डे. सो मूविंग ऑन टू द पावर सप्लाई, एंड इस बिल्ड में हम यूज़ करने वाले हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला P450B पावर सप्लाई. एज यू कैन सी 80 प्लस ब्रॉन्ज रेटेड है ये, एंड 450 वॉट्स ऑफ पावर इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस बिल्ड. Here it is. This is not RGB or anything like that fancy stuff, but still this is what it is. और as you can see MRP guys, MRP लिखी हुई है 5,050 rupees इस पर. Moving towards all the other stuff, so talking about the RAM, what I'll be using in this build. ये रहा RAM जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इस बिल्ड में. ये है HP की तरफ से आने वाली एक सिंगल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ मैं, 8GB DDR4 RAM as you can see. ये स्टिक आती है 3,000 के आसपास, सो मुझे लगभग 3,100 रुपीज़ पड़ी है. सो मूविंग टुवर्ड्स द अदर स्टफ विच इज़ 1 TB हार्ड ड्राइव जो कि बैराकुडा का है, सेगेट बैराकुडा हार्ड ड्राइव. एज यू कैन सी सील पैक है. सो 1 TB हार्ड ड्राइव चाहिए ही चाहिए भाई. हियर इट इज़. आगे बढ़ते हैं हमारी SSD के साथ. हियर इट इज़ क्रूशल BX 500 120 GB SSD. ये होगी हमारी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, and that will be for other stuff, the hard drive what I'll be using. And 1 RGB fan जो कि Ant Esports की तरफ से आने वाला है. Here it is. And yes, this MRP on this one is 999 as you can see. और ऑनलाइन में तकरीबन आपको 700 से 800 तक पड़ेगा. I think I didn't check the price exactly. So these are all the parts that I'll be using for this particular build. और अभी चलिए शुरू करते हैं बिल्ड करना. everything we had, ready for whatever's lying up ahead. We won't stop moving, feels too good for that. So good, feeling our love taking over. Our hearts getting closer and closer. I can't get enough of times of getting lost with you,
promise to be there in every single way. We're doing this together every step we take. Closer to each other, so much to discover. Getting So guys, ये रही हमारी आज की build. It's finally complete. Yes, I have done everything from cable management to all the stuff is done, and it's ready to power on for the first time. I hope nothing blows up, and let me start it up in 3, 2, 1. We should hear a beep now. Yep. Let me switch to my monitor really quick. This thing literally takes like क्या बोलूं 5 seconds, less than 5 seconds to boot up, guys. That's incredibly fast, I should say. Less than 5 seconds of turning it on. That's amazing. तो गाइज यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड और माउस का बता देता हूँ. सो दीज आर द गेमिंग स्टफ, आई मीन गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस फ्रॉम मीटियन, एंड दिस कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3000 प्लस ऑन Amazon, whereas I brought it offline, so मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिला. द मॉनिटर which I already had at my place, so अगर आप मॉनिटर लेने जाओगे तो it will cost you somewhere around 10,000 rupees or something for basic ones, but for a system like this you should be using a good quality monitor. और ये यहाँ पर 1080p monitor है, and this is more than enough for me, 32 inches as you can see, and this will cost you more than 18k. What I had brought it for somewhere around roughly 18k, I don't remember exactly, but हाँ. So guys, finally हमारा PC up and running है, and yes, there will be more videos like PC builds coming up in the future. So if you are new to the channel, consider subscribing and turning on that notification bell. I'm saying this again because I see in my studio that most of my subscribers, I mean people who watch my videos, aren't subscribed to the channel yet. By subscribe kar do, it will mean me a lot. And yes, that's pretty much it. I hope you liked it. This is all about technology 24/7. Signing off for the moment. You guys have a great day. Peace.